Sure. They're bowling first. Your thoughts on that? I mean, everyone said this at the very beginning that, they're probably going to be very crucial. That the team that wins the toss will obviously bowl first, because we did see pictures of the surface and it looked like it was extremely green. There was a lot of grass on it. So there's definitely an advantage for the seamers. And I think, look, Australia will have an advantage just being able to, I suppose, dictate play. They do have a very strong pace attack. We see Stella Campbell and Annabelle Sutherland, Darcy Brown as well, 3 seamers making their debuts. So I think it's going to be extremely exciting. You add the swing of Elise Perry and Talia McGrath to that on the toss. It's a bit of a psychological advantage, because as openers you see a green surface and you're not kind of keen to go in first because you want to see how much it's swinging, what it's doing. But look, I think the Indian openers showed against England that they do have the temperament to to play out a little while and give the bowlers an hour or two. So very exciting contest. I'm excited to see the two Australian quicks come out and maybe bowl a few bouncers at the Indian openers. Yeah, 4 debuts. Darcy Brown, Stella Campbell, Annabelle Sutherland, and Georgia Wareham. Ananya, that's a very strong attack. Even have, especially in international cricket, leave alone the test match, but that's a very strong fast bowling lineup. It's a very strong and very exciting fast bowling lineup, and I think just like Australia used Taylor Volemic in that Ashes test a couple of years ago, I think both Brown and Campbell are probably going to be the enforcers. So they'll bowl sharp spells, and just to ruffle up the Indian batters, I think they'll have very clear roles as to how they're being used, how much they're going to bowl every day. So I think the lack of a better word, the donkey's work is probably going to be done by the slightly senior bowlers in Perry and McGrath. And of course, the spinners are going to come into play as well. I think someone like Sophie Molyneux, the way she bowled through the ODI series showed that she's a fantastic holding bowler. And I think she will play a big role as the test match progresses. May not bowl a lot in the first few sessions, but I think she could be the one who holds up an end while the quicks are rotated around. So it's going to be a very exciting test, and I'm very, very keen to see how Brown and Sutherland take to day's cricket. You mentioned about that spin attack, and the first thing you kind of notice is the variety. They have Ashley Gardner, the off spinner, Sophie Molyneux, a left arm spinner that takes the ball away from a right hander, and also Georgia Wareham, the wrist spinner. Yash, काफी वैरायटी है उनकी स्पिन गेंदबाजी में. तीनों तरह के बॉलर्स हम देख रहे हैं. कितना एडवांटेज हो सकता है ऐसा आपको लगता है, स्पेशली गिवन दैट वी डोंट नो ये पिंक बॉल उन कंडीशंस में क्या करेगा? उनके पास 5 पेसर्स भी है, तो आई थिंक सो उन्होंने उनका पूरा बेस कवर कर लिया है. यू हैव एलिस पेरी, तालिया मगरा एंड द 3 पेसर्स हु आर मेकिंग देयर डेब्यूज, प्लस वेयरहैम, मॉलिन्यू, गार्डनर. सो मेरे हिसाब से वो 8 बॉलर्स जो कि 8 बॉलिंग करेंगे, 100% बॉलिंग करेंगे, अनलेस एंड अनटिल इंडिया 30 ओवर्स 20 ओवर्स में ऑल आउट होता है. नहीं तो 8 बॉलर्स बॉलिंग करने वाले हैं. ऐसा नहीं कि उनको आता है पार्ट टाइमर से, कोई भी उसमें पार्ट टाइमर नहीं है, सारे लोग बॉलिंग करते आ रहे हैं. तो मेरे हिसाब से आपके पास जब 11 लोग खेल रहे हैं, उसमें से 8 अच्छे से बॉलिंग कर सकते हैं, मैग लैनिन और 2 विकेट कीपर. तो मेरे हिसाब से इससे बेटर आप 11 नहीं पुटअप कर सकते थे. हाँ, वो शायद स्टिल मेगन शूट, वलेबेक, जोनासन, इनको शायद मिस कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो इतना बड़ा अब होल नहीं दिख रहा है, क्योंकि इतनी अच्छी 11 अब अगर आप पुटअप करते हो, प्लस आप पहले बॉलिंग कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से वो जो ट्रैक का पहले घंटे का जो यूसेज है वो काफी अच्छे से हो सकता है. अंडरलाइट्स अगर बॉलिंग मिलती है तो भी वो काफी अच्छे से मेरे हिसाब से कैम्बेल और मगरा बॉलिंग कर सकते हैं. तो काफी अच्छा 11 ऑस्ट्रेलिया ने पुटअप किया है. जी हाँ, और जब भी हम टेस्ट मैच की बात करते हैं, कोई भी इंडियन गेम की बात करते हैं, there's intrigue around the side that India feels, and today they've given 2 debuts, they've handed 2 caps to Yastika Bhatia and Meghna Singh, and again you look at that Indian 11, Yash,
नो स्नेह राणा, नो फोर्थ पेसर, तो 3 सीमर और 2 स्पिनर, ये अटैक के साथ इंडिया गए। और याद रखना, देयर इज नो पार्ट टाइम स्पिन ऑप्शन इन दैट इंडिया लाइनअप। तो इंडिया के 11 के बारे में क्या ख्याल है आपका? मैं चेंजेस चाहता था, बट कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ है। इंडिया, मिताली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि इट इज टेम्पटिंग टू गो फॉर फोर पेसर्स, लेकिन वो फिर भी नहीं गई है। मुझे कोई रीजन नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपकी जो चौथी पेसर है शिखा पांडे, वो काफी अच्छी बॉलिंग कर सकती थी। ग्रीन ट्रैक है, ग्रास है, तो मेरे हिसाब से उनका जो स्विंग होता था वो काफी अच्छा होता था। ऐसा नहीं है कि वो सिमिलर टाइप की बैटर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो अच्छी बैटर भी है, मतलब अच्छा खासा खेल सकती है टेस्ट मैच में। एक टाइम था जब वो 4 या 5 पे बैटिंग करती थी। आपने, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपने शिखा पांडे को क्यों नहीं खिलाया है। और अगर हम देखें तो झूलन, मेघना दोनों थके हुए दिखे हमको थर्ड ओडीआई में। वस्त्रकर उतना बॉल नहीं कर सकती है, तो क्या आप ये चाहते हो कि शर्मा और गायकवाड़ बहुत ज्यादा बॉलिंग करें? मुझे नहीं पता कि उसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है। अगर मैं होता तो शायद मैं चौथा पेसर खिलाता था, एक बैटर कम कर देता चलेगा। लेकिन क्या है, इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया को देखा है 4 विकेट के नुकसान से उन्होंने 270 तक लेके गए हैं और उन्होंने मैच जिताया है। तो इम्पोर्टेंट ये ज्यादा था कि आप उनकी विकेट लो और उनको जितने कम से कम स्कोर पे आउट कर सकते हो वो करिए, तभी जाके आप मैच जीत सकते हो। आपने एक कम पेसर खिला के आप शायद आपने आपके ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है कि नहीं मुझे एक बैटिंग को स्ट्रेंथन करना है, लेनदेन करना है। मेरे हिसाब से उसकी जरूरत बिल्कुल नहीं थी। जी हाँ, अगर यदि दोनों टीम की हम बात करें तो इंडिया काफी रिसेंटली एक टेस्ट मैच खेली थी अपने इंग्लैंड दौर पे, ड्रॉ किया था, बढ़िया सा फाइटिंग ड्रॉ किया था दैट ब्रिस्टल टेस्ट में। बट अनन्या, if you can, that's the only sample we have for India as well as Australia. You will have to kind of look back to 2019. But thoughts behind that Indian attack, because as Yash mentioned, the lack of fourth seamer, plus the fact that we saw how much that extra bowling option helped India in that Bristol test. And here, if you look at the top 5, and if you kind of include Tanya Bhatia in the picture as well, there are no overs from the top 5, top 6. So only 5 bowling options. Your thoughts on that? Yeah, look, I'm not surprised honestly that Rajeshwari Gaikwad is in the 11. I mean, historically, you look at the way Mithali Raj has picked her teams. She likes to have that left arm option, so I'm not surprised. I am slightly disappointed though, because you look at the surface and you I mean the first thing that comes to mind is that there is going to be a result in this test. So for me, if India wanted to be on the right side of the result, they have to pick bowlers who are going to get you 20 wickets, because that's the only way you are going to win. So if India think that the 5 bowlers they've picked are going to get them 20 wickets, then there are no complaints. Then if they go out there and do that, there will be no complaints. But I just feel like Yash said, without that 6th bowling option, you're kind of putting a lot of emphasis on Jhulan Goswami's overs, and we have seen that she is bowling. She's being bowled into the ground. We saw her bowl a lot through that England test. She's bowled continuously through the ODIs. There is a question of fitness over Meghna Singh. Can she bowl long spells? Can she last all 3 or 4 days, however long the test match lasts? And I just feel like fresh legs. Someone who can swing the ball. I think Shikha Pandey would have been a handful. I was watching another preview yesterday where Megan Schutz said that you would bring someone like Shikha Pandey in simply because of the swing that she gets. A pink ball is going to swing under lights. We saw the white ball swing under lights in the 40th, 42nd over. So why would you not bring a genuine swing bowler in? And as much as the quality of the spinners that India have, I just feel like how much of an impact are they going to have on a surface that probably won't have too much turn? And if India were going to play a spinner, I feel like Ekta Bish would have probably been a better option, because she has the best arm ball, I think, in the Indian side. And I think there are a lot of questions for me. I'm not quite convinced that these 5 bowlers
can get 20 wickets as quickly as we need. And I'd be more than happy if they prove me wrong, but I'm just quite not convinced with that attack. Yeah, and you look at that Indian 11 and it almost seems as if, as you said, that Mithali Raj likes to stick to a template. But it seemed that last minute toss-up might have been between a potential Yastika Bhatia versus a Sneha Rana or someone else who could give them bowling as well. And then they kind of have gone ahead with Yastika Bhatia. What could perhaps be the thought process? Because clearly it's not experience. Perhaps variety in that top order with left-hand, right-hand combinations? Look, I think that could be a case. I would have been quite happy if India had played Jemimah Rodrigues, because she then gives you an option with the ball. And, you know, that would have kind of been a like for like for Harmanpreet Kaur. Harmanpreet Kaur, even though she didn't bowl much in that test match, does give you the option of some off spin overs. And if you need to rotate your bowlers around or give someone a bit of rest, you do need one of your top order batters to bowl a few overs. And I feel like Jemimah Rodrigues would have probably been the perfect fit in that role. But, you know, Yastika Bhatia, we've seen her come into international cricket. She looks very, very solid, very good back foot player. And I think that's kind of what has pushed her to the forefront. Jemimah Rodrigues, as good as she is, isn't as competent off the back foot as Yastika Bhatia is. So that's probably something they've looked at, whether it's the left hand, right hand thing that's kind of also, you know, been in Yastika's favor. I'm not sure. But I think this lineup kind of, there's very little flexibility in it. So if something goes wrong, if someone breaks down, you're kind of in a soup. So I'm not sure what India are thinking right now. Indeed, it always helps to have those extra options. And यदि आजकल की बात दौर की बात करें तो एक इंटरनेट यदि फेल होता है तो दूसरा एक बैकअप के तौर पे आप रखते हैं, भले आप शायद दोनों एक साथ यूज ना करें। और यश, इस बैकड्रॉप में आपको पूछना चाहता हूं, जेमिमा रॉड्रिग्स और शिखा पांडे, दो जन जो नहीं खेल रहे, और कल जब हमने न्यूज सुनी थी कि हरमनप्रीत कौर रूल्ड आउट हैं, तो शायद कहीं लगा था कि जेमिमा रॉड्रिग्स को मौका मिल सकता है, जो कि वो बॉलिंग भी कर सकती हैं। तो उस बैकड्रॉप में क्या रीजंस लगते हैं आपको कि जेमिमा रॉड्रिग्स और शिखा पांडे दोनों नहीं खेले अब तक इस दौर पे? मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगा था कि वो लोग जेमिमा रॉड्रिग्स को खिलाएंगे। मैं चाहता था कि वो लोग खिलाए, बट मुझे कभी नहीं लगा था कि वो लोग खिलाएंगे, क्योंकि इंडिया मतलब वो एक जो थॉट प्रोसेस है कि नहीं, यास्तिका वनडे में अच्छा खेली है तो चलो उसको टेस्ट डेब्यू दे देते हैं, वो सिर्फ वैसा हुआ है कि हाँ इसने अच्छा किया है तो चलो इसी को खिला लेते हैं, रादर देन, क्योंकि अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो काफी ज्यादा बैकफायर हो जाएगा कि अच्छा जेमिमा रॉड्रिग्स अच्छी नहीं खेली, आपने यास्तिका भाटिया को क्यों नहीं खिलाया। लेकिन ये एक सेफर ऑप्शन है कि हाँ अब आप यास्तिका को खिला लिए हो, अगर वो अच्छा नहीं भी खेली तो कोई आपको ब्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्होंने ओडीआई में अच्छा किया था इसीलिए हम उनको टेस्ट में खिला रहे हैं। अब अगर वो अच्छा नहीं भी करती है तो हाँ हमने क्यों खिलाया था, क्योंकि उन्होंने ओडीआई में अच्छा किया था, तो यू हैव अ रीजन टू डिफेंड कि हाँ मैंने इस वजह से खिलाया था। सेम गोज विद शिखा, आई थिंक सो, कि हमने 3 पेसर्स और स्पिनर्स के साथ वनडे खेला था, हम उसी टेम्पलेट के साथ टेस्ट मैच जा रहे हैं। मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं बनता है, ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि अगर आप देखो तो फॉर्मेट अलग है, पिच अलग है, आप एक अलग ग्राउंड पे खेल रहे हो, आप एक अलग बॉल से खेल रहे हो, पूरा ही सेटिंग अलग है। तो मेरे हिसाब से आपने दोनों रॉड्रिग्स और शिखा को खिलाना चाहिए था। मैं शिखा को यास्तिका के जगह पर खिलाता था और रॉड्रिग्स को राउत के जगह पर। तो मेरे हिसाब से क्यों फिर आपको 7 बॉलर्स मिलते थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया 8 बॉलर्स खिला रहा है, आपको 7 बॉलर्स मिलते थे, जो आपके 5 है प्लस शिखा प्लस रॉड्रिग्स, की रॉड्रिग्स से भी आप कुछ ओवर करवा सकते हो, जो आप हरमन से करवाने वाले थे वो आप रॉड्रिग्स से करवा सकते हो। सो यू नीड, मेरे हिसाब से आपको ज्यादा बॉलर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि गोस्वामी और मेघना सिंह थके हुए दिख रहे थे, पूजा वस्त्रकर इज नॉट योर बेस्ट बॉलर कि आप उनसे ज्यादा ओवर करवा सकते हो, आपको उनका भी वर्कलोड मैनेजमेंट करना है, आगे T20 आ रही है, आपको इन सबको वर्ल्ड कप के लिए फिट रखना है। तो आप आपका बेस्ट 11 नहीं पुटअप करे हो क्लियरली, मेरे हिसाब से ये बहुत डिफेंसिव 11 है rather than अग्रेसिव 11। आप मैच जीतने से ज्यादा शायद आप ड्रॉ का सोच रहे हो या क्या, मुझे नहीं एग्जैक्टली आइडिया। अगर हम जीतते हैं तो काफी एक
अच्छी बात जरूर होगी, क्योंकि सारे लोग डिफेंड कर सकेंगे कि हाँ हमने खिलाया और ये जीत गए, बट चांसेस उसके बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि आप एक बहुत डिफेंसिव अटैक में खेल रहे हो. I think another thing, just to kind of chip in here, Pooja Vastrakar is, for me, someone who should be used like Darcy Brown and Stella Campbell. You use her as an enforcer because she's got the ability to bowl a very good bouncer. So when you have just 5 bowlers, 3 of whom are seamers, where's the flexibility to then be able to bowl her in short, sharp spells? I think there are a lot of questions, and I know, look, God forbid that any of these bowlers break down, because I think India are going to be in a very difficult position if that happens. Indeed, हम बढ़ रहे हैं उस पहली गेंद की ओर, day 1 of the pink ball test match. Remember, it's India's debut in the format and just the second ever day-night test in the women's format. But once again, आप यदि वो इंडियन 11 की ओर देखें तो लग ऐसे रहा है कि रेड बॉल एक अलग फॉर्मेट है, व्हाइट बॉल इज अनदर फॉर्मेट, और पिंक बॉल को इंडिया शायद कहीं बीच में तोल रहा है. बिकॉज जैसे कि यश ने कहा, the thought process seems to be how well some of these players did in the ODIs. We saw that bowling order do very well in that last two ODIs, even though India lost that second ODI, Ananya. And you look at that 11, you feel that India are trying to kind of mix in that white ball aggression with a bit of test match traditional support. So that seems to be the thought process. Your thoughts on that? Probably. I mean, look, teams cannot prepare exclusively for test matches because they don't play them too often. It doesn't make any sense to change your preparation for a one-off test, something that you play maybe once a year, or in this case, twice a year. So, I mean, Meg Lanning and Mithali Raj have both said it, that they're probably just going to play with that one-day formula and just extend, the periods that they're able to play with that aggression. And at the end of the day, like I said at the very beginning, when you look at the surface, you feel like there's a result. So I think runs on the board, and you have to get them quickly because it's probably a surface where your name is written on a ball. So you'd rather get runs quickly, and the lineup does look like that. You do have people who can play time in Poonam Rao, Deepti Sharma, Mithali Raj. So there is that solidity there, even Yastika Bhatia for that matter. There is a bit of solidity there, and then you have people who can score quickly, plus, as they showed in England, occupy the crease in Mandana and Burma. So, and lower down Tanya Bhatia as well. So I think there is that combination of, they understand that they do need to get runs, they need to maintain a bit of aggression, but they also need to have that solidity. So when you look at the lineup, yes, it does look like that. But I do feel like when you look at the lineup again, it feels like neither the batting nor the bowling is very strong, or as strong as it could possibly be. So as much as I think that India are continuing with that one-day formula, I'm just not convinced by it. Yeah, we've been talking about this being the second ever women's day-night test match. What happened in that first game? It was in 2017, petered out to a draw in Sydney. Not the ideal start perhaps for the format, but looking at all the talks around the conditions at the Metricon Stadium in Gold Coast, it seems like as if this won't be a drawn affair, but only time will tell. But एक और चीज है जो ज्यादा बात नहीं की गई है बिल्ड अप टू दिस टेस्ट मैच में, वो ऑल्सो एक चिन्ह है कि विमेन्स टेस्ट ज्यादा खेले नहीं जाते, बात नहीं किए जाते, वो है कि ये शायद आखिरी टेस्ट मैच हो सकता है मिथाली राज और झूलन गोस्वामी जैसे स्टॉलवर्ड्स ऑफ इंडियन क्रिकेट के लिए. यश, ज्यादा खेले नहीं गए तो वो नंबर्स बड़े नहीं दिखेंगे, बट सरप्राइजिंगली टॉक्स भी ज्यादा नहीं हुए हैं कि ये उनकी आखिरी टेस्ट मैच हो सकती है, क्योंकि शायद ये ना हो. हमको नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है. Nobody knows what the schedule is like. So you didn't know कि there was a test match in England before, like whatever 3 months before it was announced on Twitter itself. So आपको नहीं पता, आगे की सीरीज ही नहीं पता है कि क्या होने वाला है. क्या पता सूजी बेट्स को टेस्ट मैच खेलने मिल जाए, और there is a test match announced between New Zealand and India. I think so that is one major reason that people don't know if this will be Mithali and Jhulan's last test. Even I think so they themselves don't. So of course they will be preparing as if it is their last test. Numbers भी of course ज्यादा बड़े नहीं दिखेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत लिमिटेड खेला है. जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, fierce rivals,
वन ऑफ द टॉप 2 टीम्स इन विमेन्स क्रिकेट, लेकिन वो टेस्ट मैच खेल रहे 2006 के बाद। उसमें से सिर्फ तीन लोग कॉमन है, जुलियन मिथाली एंड द सिलेक्टर। सो कोई मतलब इतना कम खेला है आपने टेस्ट मैच कि आपका उस पर्टिकुलर फॉर्मेट के ऊपर किसी का जोर नहीं पड़ेगा। हाँ, ऑफ कोर्स जब मिताली और झूलन वर्ल्ड कप के लिए आएंगे तो सारे लोग बोलेंगे कि हाँ ये उनका लास्ट वर्ल्ड कप है, बिल्डअप होगा, सब कुछ होगा, शायद वो लास्ट टाइम जब इंडिया में खेलेंगे आइडियली दिसंबर जनवरी में, दैट इज अ टाइम पीपल विल से कि हाँ ये लास्ट टाइम है कि वो होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं। लेकिन टेस्ट मैच क्योंकि आपको आगे का स्केड्यूल भी नहीं पता है और क्योंकि उन्होंने काफी कम खेला है, कोई उसके बारे में बात नहीं करने वाला है। ऑफ कोर्स द लास्ट टाइम प्रोबेबली वी सी देम इन व्हाइट्स and the last time, the first time we see them with the pink one. Ji haan. Ananya, in New Zealand, as Yash said, the mechanisms here work in a way that you probably won't know now as to what's in store. But how will they prepare? I mean, will they kind of think this as their last test, or they'll kind of treat it as any other? Because remember, test match cricket is something even both of them have talked about in high regards as to they want to play more, they want to play the format. And given that there's nothing in paper at the moment for what in terms of what's in store, how will their mindset be, you think? Look, I think having had several conversations and reading what both of them have to say, they're not the type of people to be blown away by the moment. They're very the occasion. Then they don't think too much about the background of every game or every match that they're playing. So I don't think that they'll think too much about whether this is their last time in whites for India or not. They're probably just going to go out there and play to win like they always have. So it's not going to be something that's going to be at the forefront of their minds, at least now. Maybe when they look back on this tour, once they get back to India, that's a thought that could potentially cross their mind at that point, but definitely not right now. I think for them, it's just going to be about going out there, doing well, and getting India through to the end of the test. Right, it's just moments before the start of day one of this pink ball test match between Australia and India. और हम जब भी टेस्ट मैच की बात करते हैं उस पहले सत्र की बात करते हैं जहां पर मॉर्निंग होता है, ड्यू थोड़ी बहुत होती है, बॉल थोड़ी ज्यादा करती है, लेकिन यश ये वो पहली सत्र नहीं है जहां शायद बॉल ज्यादा कुछ करे। तो कितना महत्वपूर्ण होगा ये पहला सत्र भारत के लिए? काफी महत्वपूर्ण होगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि विकेट गिरे, क्योंकि जैसे ही लाइट शुरू होंगे, जैसे ही वो चेंज आएगा, वहां पर विकेट गिरेंगे, जरूर गिरेंगे। सो अगर आपके सेट बैटर्स हो तो आपको हेल्प मिलेगा वहां पे उस वक्त बैटिंग करने का। लेकिन अगर आपके बैटर सेट ना हो उस टाइम पर, नए बैटर्स आ जाए तो और उनके लिए और डिफिकल्ट होता जाएगा। तो आई वुड वांट देम नॉट टू लूज विकेट्स, but of course with the kind of attack Australia has, that 5 pacers 3 spinners, और McLennan definitely attack करेगी। मेरे हिसाब से it's going to be very very difficult for India not to lose wickets. You can see the interest building up from our talks as well. Ananya, Smriti Mandhana and Shafali Verma, the opening combination from India for that pink ball test as well. Do you kind of see them last that first hour in the first session? Because remember, as we talked about it, that batting could perhaps get harder as the day progresses, especially the twilight time with the twilight in focus. Look, I think the new pink ball is definitely going to swing. So I think it's just going to be a case of them seeing off that first hour or so and play like they played in England. If the Australians dish out a few loose deliveries, they go after them. If not, just play the ball on merit. And that's exactly what they did in England. When there was cloud cover, when we thought that Brunt and Shrubsole would kind of run through India in that second innings. So I think it's just about that. I think the middle period, and a lot of people have said this, is when that pink ball gets slightly old, it does very little. So that's the time where batters can cash in. So whether I see them lasting the first hour, look, I hope so. I just feel like Australia will have plenty of tricks up their sleeve, and there are definitely going to be chances. It's about whether they're taken or not, and I feel like the Australians probably will. So first session, I'm going to say India lose 2 wickets. Right.
We're building up that first ball. Remember, what's in store from Women's Cricket Zone is an English show after the end of every day's play, and an Hindi show to the build up to every day. So this was a जुगलबंदी. Before we shut shop, यश आपकी फाइनल राय लेते हैं कि क्या कौन आज के दिन की समाप्त है, हम किसके बारे में ज्यादा बात करेंगे? मेरे हिसाब से हम ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स के बारे में ज्यादा बात करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि आई वुड वांट बॉलिंग टू विन। टेस्ट मैच में वो ही देखने में ज्यादा मजा आता है मेरे हिसाब से। एंड प्लस पिंक बॉल टेस्ट इवनिंग, वहां पर जो विकेट होगा और उसका वो इस्तेमाल कैसे करते हैं टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज इज समथिंग आई थिंक हम शाम में उसके बारे में बात करेंगे। बट एट द सेम टाइम मेरा एक दर्शकों के लिए सवाल है कि what do you feel Jemimah Rodrigues and Shikha Pandey need to do more to get into an India 11 in any format today? जी हाँ, यश के सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा हमें कमेंट सेक्शन में। लेकिन मुझे लगा था आप कहेंगे कि हम पिंक बॉल के बारे में बात करेंगे, बट ठीक है, आपने काफी सीधा जवाब दिया। बट अनन्या, will we at the end of day's play talk about fast bowling or spin bowling? Fast bowling, no doubt. I mean, if I'm on the show, then it's going to be fast bowling. I don't spin, no. Right, let's see where that conversation goes. Day one of the only test match, the day-night test match between Australia and India. That's it from this edition of The Outside View Live. Don't forget to tune in this evening.